1. Anarchy, noun. लाकानूनियत, इंतशार. A state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling systems. 2. Viable, adjective. वो चीज़ जो मुमकिन हो, काबिल अमल, काबिल तामील. Capable of working successfully, feasible. 3. Assert, verb. हक जताना, इकरार करना, दावा. State a fact or belief confidently and forcefully. 4. Autocratic, adjective. शख्सी हुकूमत, मुतलक अलनान, आमिराना. Relating to a ruler who has absolute power. 5. Patronage, noun. ताईद, हिमायत. The support given by a patron. 6. Chunk, noun. बड़ा टुकड़ा, गिल्टी. A thick, solid piece of something. 7. Relish, verb. मज़े लेना, लुत्फ उठाना. Enjoy greatly. 8. Reign, noun. इनान, लगाम, इख्तियार. Keep under control, restrain. 9. Predicament, noun. बुरी हालत, खतरनाक सूरत हाल. A difficult, unpleasant, or embarrassing situation. 10. Annals, noun. तवारीख, तक़वामी तरतीब से मुताल्लिक. A record of events year by year. 11. Decay, verb. खराबी, सड़ना, मुरझाना. Of organic matter, rot or decompose through the action of bacteria and fungi. Although most commentators and analysts agree that what is being witnessed today is chaos and a slide into anarchy, optimists may still argue some good will come out of it, as whatever has been happening for a number of years now had become untenable. Love him or hate him, Imran Khan should be given credit for triggering the crisis and shining a spotlight on the elephant in the room, after his falling out with his key military supporter, the recently retired army chief, and his consequent ouster from office in a parliamentary vote of no confidence. Whilst other politicians have retreated to their lairs in similar situations in the past to lick their wounds so they can live to fight another day, Imran Khan followed a scorched earth policy and embarked on the path to bring down the entire edifice of the system. Obviously, he was able to do this because of the policies of the security establishment which presented and promoted him as a viable, clean alternative to dirty and corrupt politicians with whom it had no issues till they started to assert their constitutional, civilian authority. Imran Khan should be given credit for shining a spotlight on the elephant in the room. In a country with nearly half its life under direct military rule and even longer under quasi-military rule, state largesse at the disposal of the autocratic military ruler enabled the so-called establishment to create constituency through patronage for its own self and its surrogates. In an almost unprecedented turn of events, Imran Khan's falling out with the top military commander provided him a chance to claim a chunk of the constituency that the establishment had carved for itself, and he did do with great relish. This constituency pardoned by Imran Khan now lends weight to his claim that in any future partnership, unlike in the recent past, it would be him who would be the senior partner and not, as he claimed, a mere minion whose job was to rubber stamp decisions taken elsewhere and serve as a punching bag. It warrants bearing in mind that this constituency is not the usual one of shirtless voters across the length and breadth of the land, but one with influential players in the country's power corridors, including men in uniform, black robes and other movers and shakers of Pakistani politics. On top of such powerful supporters, Mr. Khan and his party have excelled at creating and sustaining a narrative, even if many of its elements fall in the post-truth category, by pulsating it relentlessly via social media. As things stand, theirs is the dominant narrative, with their rivals mostly trying to play catch-up, and that too in a rather clueless manner. I am not sure if examples such as Trump's rise to power and influence in the US or the Brexit campaign and the referendum vote in the UK, following similar media/campaign strategies, can have a bearing on any electoral exercise in Pakistan. But if they do,
Imran Khan will yield a huge electoral dividend. That must be the reason that so many statements of the government leaders today leave one with the impression that one is processing the view of the opposition. Rarely has a government looked so besieged, so exposed, and with no comfort blanket. With the noose of a sinking economy around its neck, spiraling inflation, a plummeting growth rate which means millions more added to jobless lists across the country, and elections this year, whether or not in 90 days for the 2 dissolved provincial assemblies and for the other 2 and the National Assembly a few months later, there is no protective canopy. If things weren't bad enough with Imran Khan constantly trying to destabilize things, even as his jail Baro Tariq, fill the jails campaign, ironically is turning out to be a jail Kali Rocco Tariq, keep jails empty campaign, terrorism is raising its ugly head again. It is beyond the scope of this column to examine in detail why terrorists seem to be enjoying a free rein. Suffice it to say that the blame falls squarely on the shoulders of our military-civil leaders of the time whose blunders, after the fall of Kabul and their manner of engagement with TTP, and not with TTP patrons, the Afghan Taliban, and the largely undisclosed concessions extended to the terrorists seem to have resuscitated them. Against this backdrop, you would be well within your rights to ask me, how in the world any optimist would see anything positive emerging from the constitutional, economic, governance and security conundrums facing our beloved land and its multitudes. Allow me the liberty. For long I have believed in the rule of law and supremacy of the Constitution. A critic may find this an oversimplification, but every time over the past decades when Pakistan seems to have stared down the abyss, the predicament has followed a bout of adventurism, shenanigans, deviation from the Constitution. Today's situation is no different. We needn't go back deep into the annals of history. Just rewinding to less than a decade ago would bear me out. The worst consequence of such deviations is that they need facilitators/collaborators to get away with, and this leads to institutional decay. Even as the Constitution is treated with contempt by unelected institutions, they need some form of endorsement for their extra-constitutional plots and games. Thus, sympathetic or vulnerable/compromised elements are found in key institutions to do their bidding. If you ask me, this is the most alarming factor, even more than corrupt politicians who can, and have been booted out at will. Their removal has solved nothing, as each such instance of adventurism and political engineering and its endorsement creates a deeper rot elsewhere. If everyone accepts that we are sliding into chaos and anarchy and the status quo can't be sustained, then let all that ails us be acknowledged. When the sacred cows are reminded they aren't better than the rest of us, they may shed their holier-than-thou attitude and address the rot within. The writer is a former editor of Dawn. Published in Dawn, February 26, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. अगरचे ज़्यादातर मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आज जो कुछ देखा जा रहा है वो अफरा-तफ़री और इंतशार की तरफ बढ़ना है, लेकिन उम्मीद परस्त अब भी ये दलील दे सकते हैं कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा, क्योंकि जो कुछ भी कई सालों से हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। इनसे मोहब्बत करें या उनसे नफ़रत करें, इमरान खान को इस बहरान को जन्म देने और अपने अहम फ़ौजी हामी, हाल ही में रिटायर होने वाले आर्मी चीफ से इख्तिलाफात और उसके नतीजे में पार्लियामेंट में अदम एतमाद के वोट में ओहदे से हटाए जाने के बाद कमरे में मौजूद हाथी पर रोशनी डालने का सहरा दिया जाना चाहिए। जबकि दीगर सियासतदान माजी में भी इसी तरह के हालात में अपने जख्मों को चाटने के लिए पीछे हट गए हैं, ताकि वो एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रह सकें। इमरान खान ने जलती हुई जमीन की पॉलिसी पर अमल किया और निज़ाम की पूरी इमारत को गिराने की राह पर गामजन हो गए। जाहिर है कि वो ऐसा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से कर सके थे जिन्होंने उन्हें गंदे और बदउनवान सियासतदानों के एक काबिल अमल और साफ सुथरे मुतबादिल के तौर पर पेश किया और फ़रोग़ दिया, जिनके साथ इस वक्त तक कोई मसला नहीं था जब तक कि उन्होंने अपने आईनी सिविलियन इख्तियार पर जोर देना शुरू नहीं किया। कमरे में हाथी पर रोशनी डालने का सहरा इमरान खान को दिया जाना चाहिए।
एक ऐसे मुल्क में जिसकी आधी जिंदगी बराह रास्त फौजी हुक्मरानी के तहत और नीम फौजी हुक्मरानी के तहत इससे भी ज्यादा तवील हो, मुतलक अलनान फौजी हुक्मरान के इख्तियार में रियासत की बालादस्ती ने नाम निहाद एस्टेब्लिशमेंट को अपने और अपने माविनीन की सरपरस्ती के जरिए हल्का बनाने के काबिल बनाया। एक गैर मामूली वाकया में इमरान खान के आला फौजी कमांडर के साथ इख्तिलाफात ने उन्हें इस हल्के के एक हिस्से पर दावा करने का मौका फराहम किया जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए बनाया था, और उन्होंने ये काम बड़े शौक से किया था। अब इमरान खान की मलकियत वाला यह हल्का उनके इस दावे को तक़वियत देता है कि माजी करीब के बरक्स मुस्तकबिल की किसी भी शराकत दारी में वो सीनियर पार्टनर होंगे, न कि जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि उनका काम कहीं और लिए गए फैसलों पर रबड़ की मह लगाना और पिंचिंग बैग के तौर पर काम करना था। इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि यह हल्का मुल्क के तूल व अर्ज में शर्टलेस वोटर्स का आम हल्का नहीं है, बल्कि मुल्क के इक़्तिदार की राहदारियों में बासर खिलाड़ियों के साथ है, जिन्हें वर्दी सियाह लिबास में मलबूस अफराद और पाकिस्तानी सियासत के दीगर मुतहर्रिक और शिकर शामिल हैं। इस तरह के ताकतवर हामियों के अलावा मिस्टर खान और उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए एक बयानिया तख्लीक करने और इसे बरकरार रखने में महारत हासिल की है, भले ही इसके बहुत से अनासिर सच्चाई के बाद के जुमरे में आते हों। जहां तक हालात हैं, उनका बयानिया गालिब है, जिसमें उनके हरीफ ज्यादातर कैच अप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बेखबर अंदाज में। मुझे यकीन नहीं है कि अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार और असर और रसूख में इजाफा, ब्रेग्जिट मुहिम और बरतानिया में रेफरेंडम के वोट जैसी मिसालें इसी तरह की मीडिया / मुहिम की हिकमत अमली पर अमल करने से पाकिस्तान में किसी भी इंतखाबी मश्क पर असर पड़ सकता है या नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इमरान खान को बहुत बड़ा इंतखाबी फायदा होगा। शायद यही वजह है कि आज हुकूमती रहनुमाओं के इतने सारे बयानात से ये तासुर मिलता है कि कोई अपोजिशन के नुक्ता नज़र पर अमल कर रहा है। शाज़ व नादिर ही कोई हुकूमत इतनी महसूर, इतनी बेनकाब और आरामदेह कंबल के बगैर नजर आती है। डूबती हुई मईशत का फंदा उसकी गर्दन में है, बढ़ती हुई अफरात ज़र, गिरती हुई शरह नमू, जिसका मतलब है कि मुल्क भर में बेरोजगारों की फहरिस्तों में लाखों मजीद इजाफा हुआ है। और इस साल इंतखाबात, चाहे 2 तहलील शुदा सूबाई असेंबलियों और दीगर 2 और चंद माह बाद कौमी असेंबली के लिए 90 दिन में हो या ना हो, कोई हिफाजती छतरी नहीं है। अगर हालात इतने खराब नहीं थे कि इमरान खान मुसलसल हालात को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी जेल भरो तहरीक, जेल भरो मुहिम सितम ज़रीफी के तौर पर जेल खाली रखो तहरीक बन रही है, लेकिन दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। ये इस कालम के दायरा कार से बाहर है कि तफसील से जायजा लिया जाए कि दहशतगर्द आज़ादाना लगाम से लुत्फ अंदोज क्यों हो रहे हैं। ये कहना काफी है कि इसकी जिम्मेदारी इस वक्त के हमारे फौजी और सिविल रहनुमाओं के कंधों पर आयद होती है, जिनकी गलतियां सकूत काबुल के बाद और टीटीपी ना कि टीटीपी के सरपरस्तों अफगान तालिबान के साथ उनकी वाबस्तगी के तरीकाकार और दहशतगर्दों को दी जाने वाली बड़ी हद तक गैर अलानिया मुराद ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया है। इस पस मंजर में आपको मुझसे ये पूछने का हक हासिल होगा कि दुनिया में कोई भी उम्मीद परस्त हमारी प्यारी सरजमीन और उसकी बड़ी तादाद को दरपेश आईनी, माशी, गवर्नेंस और सलामती के मसाइल से कुछ मुस्बत उभरते हुए कैसे देखेगा। मुझे आज़ादी दो। मैं तवील अरसे से कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। एक नक्काद को ये एक हद से ज्यादा सादा लग सकता है, लेकिन गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान जब भी पाकिस्तान को गले की तरफ देखा गया है, तो ये सूरत हाल मुहिम जोई, गुंडागर्दी और आइन से इनहिराफ की जद में आई है। आज की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। हमें तारीख की गहराइयों में वापस जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दहाई से भी कम अरसा पहले की तरफ लौटने से मुझे फायदा होगा। इस तरह के इनहिराफोहे का बदतरीन नतीजा ये होता है कि उन्हें इससे बचने के लिए सहूलतकारों / माविनीन की जरूरत होती है, और ये इदारा जाती जवाल का बाइस बनता है। यहाँ तक कि गैर मुंतखब इदारों की तरफ से आइन के साथ तौहीन आमेज सलूक किया जाता है, लेकिन उन्हें अपने मावराए आइन साजिशों और खेलों के लिए किसी न किसी तरह की तौसीक की जरूरत होती है। इस तरह हमदर्द कमजोर / समझौता करने वाले अनासिर अहम इदारों में अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए पाए जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये सबसे खतरनाक उनसर है, यहाँ तक कि बदउनवान सियासतदानों से भी ज्यादा, जो अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं।
इनको हटाने से कुछ भी हल नहीं हुआ है, क्योंकि मुहिम जोई और सियासी इंजीनियरिंग की ऐसी हर मिसाल और उसकी हिमायत कहीं और गहरी सड़न पैदा करती है। अगर हर कोई यह तस्लीम करता है कि हम अफरा-तफरी और इंतशार की तरफ जा रहे हैं और जूं का तो बरकरार नहीं रह सकता, तो हमें जो कुछ भी दरपेश है इसे तस्लीम किया जाए। जब मुकद्दस गायों को याद दिलाया जाता है कि वो हम में से बाकी लोगों से बेहतर नहीं हैं, तो वो अपने मुकद्दस रवैये को छोड़ सकती हैं और अंदर की सड़न को दूर कर सकती हैं। मजमून निगारदान के साबिक एडिटर हैं। अखज़ शदा बतारीख 26 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.